Good morning, my dear students, and peace be with you all. I hope you are doing well. Today we are going to start our lecture number 7. Today we are going to start our lecture number 7. Kindly, our today's topic is exponents. All of you please take out page number 58. The very first thing, let's have a quick review of previously taught concept. What are exponents? What are exponents? If you can see, I have three numbers 5, 5, and 5. Now, kindly check it out. How many times 5 falls? On the other, it falls 3 times. So, I can write 5 to raise power 3. 5 to raise power 3. That is the that 3 is an exponent. On the other hand, we can see we can say in other way, 5 to raise power 1, 5 to raise power 1, 5 to raise power 1। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में हम पावर्स को ऐड करते हैं। 1 और 1 को अगर आप ऐड करो तो डेफिनेटली आपके पास आंसर क्या होगा? आपके पास आंसर होगा 3। So that 3 is your exponent. Now you can see another number. There is 2x to raise power 1. 2x to raise power 1। अब इसमें 2 आपके पास क्या है? कोफिशिएंट। x you have a base and that power is an exponent। That power is an exponent। Kindly keep this 3 into mind। Let's move toward the next slide। Things to remember। Things to remember। Book page 58। 5 to raise power 3। 5 और उसकी पावर में 3 है। 5 to raised power 3 is 5। इसको हम इस तरह से रीड करेंगे। अगर आपकी बुक को हम कंसल्ट करें, पॉइंट टू रिमेंबर इज दिस। 5 to 3 is read as 5 raised to the power 3 or 5 cube or 5 cube। इसी क्यू अगर 3 की जगह आपके पास 2 आ जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्क्वेयर हो जाएगा। 5 स्क्वेयर। अब हम इसमें जल्दी से चेक करते हैं। आपके पास 6 टू रेज पर 2 है तो 2 इसमें क्या है? आपके पास एक्सपोनेंट है। इसमें एक्सपोनेंट क्या है? 5। एंड व्हाट इज इन इट? इट इज 3। 7 टू रेज 7 रेज टू पावर 4। इसमें आपके पास एक्सपोनेंट क्या है? 4। Likewise, another example, 8 multiply by 8 multiply by 8. How many times 8 have fall here? 1, 2, 3. So 8 to raise power 3 is the number you have, where 8 is the base number and 3 is the exponent of it. Now, that day we have done with that. So I'm going to give you a quick review of this. Point to remember is a number x is read as x raised to power n. N could be any number. N could be any number. It could be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N means that x is multiplied to itself n times. Itself n times, and n could be any natural number. Now, other point to remember, it may fall in form of MCQs. Inshallah, by next Monday, I will conduct a poll in the class as we did yesterday. Okay, now kindly see this one. -1 to raise power even number। अगर आपके पास एक नंबर हो -1 and its power should be any even like 2, 4, 6, 8, let's say 52, let's say 100। any number आपके पास -1 हो और उसकी पावर इवन हो and that power should be anything। वो एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। it could be a greatest number or a smallest even number। the answer would automatically comes 1। How? I have chosen an example and I'll explain that to you almost in the ending slides। Next is -1 to raise by an odd number। It means कि अगर आपके पास odd number में आपका exponent हो तो उसका आंसर आपके पास -1 आता है। Let me explain this thing to you।
let me explain this one. Let's suppose you have minus 1 and raised by 3. अब आप मुझे बताओ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को हम इट्स सेल्फ 1 के साथ जितनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर डेफिनेटली वुड बी 1. इज दिस क्लियर? हम 1 को जितनी दफ़ा भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 100 टाइम्स कर लें, 1000 टाइम्स कर लें, 3 टाइम्स कर लें, 4 टाइम्स कर लें, आंसर विल बी 1. Answer will be 1. Now, other thing is, let's deal with the sign of subtraction. Sign of subtraction here lies 3 times. अब आप देखो the rule of signs हमने किया था first chapter में. When we are going to multiply minus into minus, the answer would be plus. अब इस plus को और इस माइनस को अगर हम डील करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. इसका मतलब है कि आपके पास जब भी माइनस ऑड नंबर में होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है माइनस 1 टू रेस पर 5. उसने 5 टाइम्स 1 को यहाँ पे लिखा है. नाउ आप इसको मल्टीप्लाई करो. Just try to multiply that in your mind. 1 ones are 1. Again 1 ones are 1. 1 ones are 1. 1 ones are 1. So my answer is 1. Let's start with the signs. Minus minus, plus, plus minus, minus, minus minus, plus, plus minus, minus. So my answer is minus 1. That's how we are going to work it out. Example number E. Kindly check this one. माइनस 1/2 होल पावर 2. इसकी होल पावर 2 है, इसकी एक्सपोनेंट 2 है. इट मीन्स कि हमने पूरी की पूरी फ्रैक्शन को 2 टाइम्स लिखना है. अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हम इसको 3 टाइम्स लिखते हैं. अब आप सबसे पहले साइन को डील करेंगे. माइनस एंड माइनस प्लस. आपके पास न्यूमिनेटर में 1 है तो 1 ones are 1. अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की है. We just discussed that if we multiply 1 itself, then answer would be 1. After that, in the denominator, you have 2 here in the first fraction and 2 in the other one. When we multiply 2 by 2, my answer would be 4. Same like 3 to raise power, 3/4 whole to raise power is 5. Now I will write this fraction 5 times and simply multiply the numerators among themselves and the denominator, like 4 fours are, then again whatever the product will be, we keep on the multiplication and we will get an answer simply. Example number 2, express the following in exponential form. Write the base and exponent of each. All the numbers that you can see here, we got it with the help of prime factorization. With the help of prime factorization. At the beginning of our lecture, I have made some drills with your help and you successfully done the prime factorization. Hope you can try, when you can try it at home, it will be clear and smooth to you. If there would be any problem, we can discuss it by tomorrow. Now, 625, when we did the prime factorization, we get 5 4 times, and the other number, the factor is 11, that falls 4 times. So whole power would be 4. The base in that is 5/11 and the exponent is 4. Let's take example number D. When we prime factorize 8, we get 2 3 times, and in 27 we get 3 3 times. Because both of the numbers have same exponent, that's why we are writing under the same umbrella. We will put the bracket, and then at the right top corner we will write 3 as an exponent. Minus 2/3 will be base into that, and 3 is my exponent. I hope it would be clear. Okay, example number 3. Write the following in the exponential form. In the previous examples that you did, here exponent form was given. Here exponent form was given and we have to simplify that, and on
In example number 2, we have totally opposite thing. The number is given and we have to write that in exponential form. So please with me, let's do the prime factorization of this number. The number is 36. हम 36 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है. Let's start together, my dear students. Let's start it. It's an even number, so it will be divided with the 2. 2 ones are 2. 3 minus 2 1. 1 आपके पास carry चला जाएगा. The new number that is with you is 16. So 2 8s are 16, and all this one you will do in a rough working column. Next one is 2 9s are 18. After that, it is a odd number, and I can see and I know that the minimum number with it would be divided is 3. Minimum odd number, smallest odd number. 3 threes are 9 and 3 ones are 3. So the factors that I get here is 2, 2, 3 and 3. So I'm going to write 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. Now kindly just work it out. How many 2's are there? 2 times. So 2 to raise power 2. How many 3's are there? 2 times. So 3 to raise power 2. Is this clear? Kindly show me a thumbs up if it is clear. Okay, thank you so much. Thank you. Both of the numbers have same exponents. Both of the numbers have same exponents, so I can write these two under the same bracket because their power or their exponent is same. Their power or exponent is same. So 2 threes are 6. 6 to raise power 2 is my answer. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. On the other hand, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसा इसने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है. प्रोसीजर आपके पास सेम होता है, बस उसका अडॉप्ट करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. मैंने आपको एक सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन में करवाने की कोशिश की है. होप दिस थिंग इज क्लियर. एग्जाम्पल नंबर 4 वी आर नॉट गोइंग टू टच टुडे. We will do it on some other day. Let's move toward our next slide. Question number 1 I have given you on last day, and so as question number 2. That would be your today's homework. I will try to do some question from exercise. Question number D I have selected to explain that to you. I have a number that is minus 5 over n to raised power 4. इट मीन अगर इसकी पावर 4 है तो हम इसको 4 टाइम्स लिखेंगे. इस सेम फ्रैक्शन को 4 टाइम्स लिखेंगे. अब आप चेक करो कि 5 और 9, 5 और 9, 5 9, 5 9 इज देयर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. नो कैंसिलेशन एंड रिडक्शन इज पॉसिबल. इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ये डिविजिबल नहीं है ये नंबर्स आपस में. तो हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस. 5 5s are 25, 5 5s are 25. Now let's move towards the denominator. 9 9 times 81, 9 9 times 81. Now please make rough working column. Please make a rough working column and multiply 25 by 25. As you can see here, my answer is 625. And so as on the same basis, when I'm going to multiply 81 with 81, my answer would be 6561. They have asked you to give the answer in P over Q form without any exponent. So that is my answer. There is no exponent in my solution. Now let's move toward question number 2.
Question number 2. Minus 27 or over 64 is a number you have to change into exponential form. For exponential form, I have did step number 1, that is prime factorization. All this must be done in the rough working column, but to make you people clear, I have did it here on the solution side. Let's say 27. 27 is an odd number, and I know that it is divisible by 3. 3 threes are 9. Sorry, 3 nines are 27. That is my quotient. So I will write under 27. Again, it is divisible by 3. 3 threes are 9. 3 ones are 3. So I get 3 prime factors of 27, and 3 prime factors, those are 4 of 64. आपके पास 27 न्यूमिनेटर में था, तो 27 के फैक्टर्स आप न्यूमिनेटर में लिखोगे. 64 आपके पास डिनोमिनेटर में था, so we are going to write that in the denominator. The sign of negativity remain with us. There is no need to touch that. So that minus will come here first. 3 to raise power 3, 4 to raise power 3. As we can see, both the exponent are same, so we can write it under the same bracket. Bracket start, sign of negativity, 3 over 4, bracket close, and to raise power 3 is my answer. Let's move on. क्वेश्चन नंबर 4. अभी हमने जो पॉइंट टू रिमेंबर में देखा था कि अगर आपके पास -1 की पावर कोई इवन नंबर हो तो ऑड नंबर हो तो उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या होता है. अब आप चेक कीजिए कि 81 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर. या डेफिनेटली इट इज़ एन ऑड नंबर, सो साइन ऑफ नेगेटिविटी विल स्टे देयर and -1 as it is, because I told you earlier at the beginning of my lecture that हम 1 को जितनी मरतबा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, it doesn't matter, the answer will be 1. I have selected some other question. 2 to raise power 2 plus minus 5 to raise power 3. 2 to raise power 2 means कि हमने 2 को 2 times लिखना है. 2 2s are 4. Here we fall sign of addition, वो as it is रहेगा. -5 टू रेज पावर 3, इसका मतलब है कि -5 को 3 टाइम्स लिखना है. अब आप चेक करो गाइस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर आपके पास -5 है. प्लस माइनस माइनस 25 को आप अपने रफ वर्किंग कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 125. अब आपके पास दो नंबर आ गए गाइस. फर्स्ट नंबर इज 4 एंड द अदर नंबर इज -125. As we always discuss with the people, when there is no sign at the left hand side of a number, the absolute sign is sign of addition over here. I can say in the other word, like अगर किसी नंबर के स्टार्ट पर कोई साइन नहीं होता तो वो साइन माय डियर एडिशन का होता है. दैट इज अंडरस्टूड. सो इन माय रफ वर्किंग कॉलम आई एम गोइंग टू राइट -125 एंड +4. रूल ऑफ साइन हमने किया था. प्लस माइनस क्या होता है गाइस, माइनस. हम इस वैल्यू करेंगे माइनस, और साथ आंसर में जो साइन आएगा दैट वुड बी ऑफ ग्रेटर नंबर. दैट वुड बी ऑफ ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर आपके पास -125 है, ये वैल्यू माइनस की है, सो आई एम गोइंग टू राइट -121. Next is example number E. I have selected from question number 4. 6 to raise power 2 divided by 3 to raise power 3. डिवाइड मीन्स इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं हम, और ये जो आपके पास हम साइन लगाते हैं, इट मीन्स ऑफ डिवीजन. ये जो लाइन हम लगाते हैं इसका मतलब डिवीजन ही होता है. So my numerator becomes 6 to raise power 2. It means I have to write 6 into 6. 3 to raise power 2. आप 3 को 2 times लिखोगे, और in between that जो sign आएगा, that sign would be of multiplication. अब आप चेक करो क्या इसकी रिडक्शन पॉसिबल है. Yes, we can reduce that. ये जो हम कैंसलेशन करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टू रिड्यूस द टर्म, टू रिड्यूस द फ्रैक्शन. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6. न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, व्हाट इज द लेफ्ट आउट बिहाइंड, व्हाट द कोशेंट्स बिहाइंड, 2 into 2, and in the denominator I get 1 into 1. 2 2s are 4 and 1 1s are 1. Keep in mind
जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आंसर होगा, वी आर नॉट सपोज टू राइट दैट. दैट इज अंडरस्टूड. Thank you. Let's move toward example number J. Exercise question, sorry, it's not an example. 3 over 4 is a fraction with the exponent 2 multiply 4 over 3 with the exponent 3. It means कि इस वैल्यू को आपने 2 टाइम्स लिखना है और इस वैल्यू को आपने 3 टाइम्स लिखना है. अब आपको पता है हम इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करते हैं. 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, 2 times 3 will be cancelled with this 2 times 3. Left out numbers are 4 over 3. 4 over 3 would be my 4 over 3 would be my answer. I hope things would be easy for you. Thank you so much. That's all for today. After this, I will take your question. And last but not the least, I have a request for you people. Kindly stay home, stay safe, and save others. Please, it's about all of us. Thank you so much. Have a great time.